पे उसका लोकेशन बदल जाता है, यहाँ पे बोला जाता है x नॉट। दैट मीन्स x नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए लिख दिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट p x नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x, दैट इज x बार रीड्स एज x नॉट। यहाँ पे इसको बोला जाएगा x नॉट। यहाँ से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर आर टू इवेंट्स। यहाँ पे दो इवेंट आ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, दो इवेंट आ रहा है साथ साथ, दो आ रहा है और साथ साथ। One is the x1, another is the x2, and here it is referred as the composite event. तो क्या बोला गया? Composite event. Composite event means the two elementary events occur simultaneously. एक साथ, जैसे आप दो कॉइन करते हैं एक साथ, तो one coin is elementary, another coin is elementary. एंड बोथ जब आएगा तो क्या हो जाएगा? साथ, एक साथ। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। एंड हियर ऑब्जर्व हियर, टू इवेंट्स साइमल्टेनियसली, दो इवेंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली। एंड हियर देन देयर आर टू आउटपुट्स फॉर द वन इवेंट, x1, probability of x1 and probability of x1 not, probability of x2 and probability of x2 not. That means here there are four combinations of the probability. That is x1 and x2 simultaneously, x1 and x2 not, x2 and x1 not, x1 and x2 not. That means all these four, the combination of all these four are equal to 1. Here, events occur, and when we try to calculate the probability of the one event occur, here there are the two events are simultaneous. ध्यान यही पे देना, important यही पे है। यहाँ पे आपको आगे काम है शुरू में, that is the two events occurred simultaneously. Suppose you are going in a field survey or you are doing the experiment in the laboratory and you observe the two results simultaneously, either or you observe the two factors simultaneously in any population, in some cases, not in all cases. Then you want to determine the probability of any one event. You observe the two events, but you want to calculate the probability of any one event. क्योंकि आपका जो फैक्टर है स्टडी का वो एक है, दो है तो फिर तो झंझट भी नहीं है। And in that condition you want to calculate the probability of either x1 or x2. And if you calculate the probability of x1, then you easily calculate the probability of x1 not. And if you calculate the probability of x2, then you easily calculate the probability of x2 not. That means the major point is to calculate the probability of x1 and probability of x2 in the composite events. You want to calculate the probability of x1. That means the x1 is here and x1 is here. That means the probability of x1 and x2 plus the probability of x1 and x2 not. Both are calculated. Both are added for the calculation of probability of x1. Likely, for the probability of x2, we calculate the probability of x1, x2, then the probability of x2 and probability of x1 not. Clear? यहाँ पे जो है it is also important like the composite. Composite वाले में हम क्या बोलते हैं? Odd ratio is derived from the composite event. Odd ratio is used for the determination of risk factors in the individual condition. When you will go to a study, universal study, you will use the composite event and the case based on the case of the odd ratio.
Here it is the conditional probability. And conditional probability means the one event depends on the probability of one event is dependent on the probability of another. For example, the characterized by the occurrence of event 2 with occurrence of event 1 and symbolically represented by P x2 depends on x1. It is the symbolically represented by the P x2 depended on the x1. Read like this. P x2 depended on the, that means the probability x2 depended on the x1. That means P x2 depended on the x1 is equal to P probability value of the x1 and x2 divided by probability value of x1. And here you both the probability of the both events x1 and x2 and probability of the x1. For this you come here and determine like this. As for the component event, P1 is determined from the here and this one is determined from the here, and on this basis you usually calculate that the P probability of the second event dependent on the probability of the first event is calculated by that. And it is the root 4. It is the root 4. And on this basis, on the basis of the conditional probability, we use a number of results. Yeah, इसका बहुत like addiction. Suppose we want to study the effect of the drug addiction on the mental ability. We want to study any factor on any disease. We want to study any genetic factor on the appearance of any of them. That means there are two probabilities, the probability of the two factors. And here we want to determine the probability of the one event instead of the others. In addition, with this, it is also used for the determination of the sensitivity. If any person develop a new technique in the laboratory for the detection of any disease or for the detection of any problem, and he wants to determine the efficacy of that particular method, that is referred technically as the sensitivity and specificity. Two terms are used here, the sensitivity and specificity. Suppose करो कि तुमने एक कोई नया मेथड डेवलप किया, वो का मतलब ये नहीं होता कि आपने और कुछ फील्ड में से लाख जान लीजिए जाना। आपने कुछ एक नया एक टेक्निक डेवलप किया किसी चीज के डिटेक्शन के, या कोई चीज बना और आपने बोला या कोई मेडिसिन बना, आपने बोला या कोई वैक्सीन बना, एनीथिंग, अभी आपका कोरोना का बोला, तो आपने वो बोला कि ये जो है इसके लिए कारगर है, या आप ये बोल रहे हैं कि ये जो मैरिजुएना लोग को ले रहा है उसके चलते इंस्ट्रूमेंटल कैपेबिलिटी कर रहा है, या युगाटा मिल रहा है इसके चलते यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, या ये स्मोक कर रहा है इसके चलते यहाँ कैंसर कर रहा है। So that is the two events. यहाँ पे दो events है, probability of the one event. That means that the second event depends on the first. That is the conditional. It is referred to the conditional. And it has the number of usage conditions. इसका रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज है. That is the referred to the conditional probability. Characterized by the occurrence of event 2, the occurrence of event 1, and symbolically represented by probability of event 2 dependent on event 1. That probability is calculated by probability of both the events simultaneously divided by the probability of the event 1. And if you alternate one person on P, x1 dependent on the x2. That means here, again the formula is likely the P x1 x2 divided by P x2. If you change the dependency, then you also change that. That is the rule. So, rule 5. It is the independence. It is the independence. Independence means you want to determine that the two factors looks like as the appeared simultaneously, but both are the independent. And if it is the independent,
That means P2 dependent on the A is equal to P2, Px2, and Px2 x1 that is also Px, because both are the independent. Both are the independent. That is the rule of independence. Here, that means the two events x1 and x2 are independent. When the conditional probability, the conditional probability of event 2 x2 gives x1 has equal the probability of the event of x2. Clear? So, if they are independent, then you will use the multiplication. Multiplication will be the same as the conditional probability. But since they are the independent, the nature is changed like this. That means the multiplication theory resembles with conditional probability. It resembles with the conditional probability. But multiplication theory is applied without considering the independency of the event A and B. That means both are the independent. And if both are the independent, then the probability of the F2 dependent on the x1 and probability of the F2 dependent on the x1 naught is equal to the P probability of the F2. That means P1 x2 P1 multiplied by P x2 dependent on the x1. That means it is also replaced by the x2 P x1 multiplied by P x2. Clear? That means likely, जैसे हम अभी बोले just I told you that if you use the two dices, then both dices are independent. If you use the 2 points, both points are independent. And here, in all these conditions, the probability of the is multiplied. Clear? So we asked then this value is equivalent to the probability of x2. Okay? And here, if you use the multiplication theory, that means P1 x1 is P probability of x1 multiplied by the P x2 dependent on the x1. It is the conditional probability. It is the conditional probability as you used earlier. That means the Px1 multiplied by the Px. That is replaced simply. That means 1 by 6. जितना पॉइंट्स ले रहे हैं या ये ले रहे हैं उसके प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट को क्या कर रहे हैं 2 है तो आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 by 6 मल्टीप्लाई बाय 1 by 6 डाइसेस अगर वो पॉइंट्स है तो 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 बिकॉज़ दैट इज डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट दैट इज इंडिपेंडेंट वहां पे इंडिपेंडेंट हो गया दैट मींस दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंसी इट इज इक्वलाइज p x2 x1 x1 not x2 x1 not x1 not x2 is equivalent to the px2. Similarly, the p2 x2 and p2 x2 is also equal to px2. That one p1 x1 and that is the px2. Clear? Yes. It is also dependent on the conditional probability. It is also dependent on the conditional probability, but they are independent. Dependent on the conditional probability, but they are independent. And here x1 and x2, clearly x1 and x2 is changed by the symbolically by a and b. Changed symbolically by a and b. Because here I have changed the notation because on this basis a theorem is developed in the probability, that is Bayes' rule, which I am not going to describe. That is the Bayes' rule. B-E-Y-E-S. Okay? And here, the composite event. It is referred to the composite event. Composite आपको पहले भी मिला? नहीं मिला? मिला तो है composite. Rule 3 है मिला. That is derived on the basis of the composite testing. And composite से ही इसका derivation. And here, A occurs but not B. यहाँ पे 3 conditions हैं. A occurs but not B. B occurs but not A. And A and B both are simultaneously occur. 3 conditions. 2 composites. A occurs but not B.
B over what not A, and both A and B are ठीक है. Then the probability of A or B difference नहीं क्या है? ध्यान दीजिए, वहां पे लिखा हुआ है A and B. यहाँ पे जहाँ पे मेन मामला है फंस रहा है, यही तो फंस रहा है. पहले यहाँ पे है A and B, यानी both are simultaneously. यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, A अथवा B. वहाँ पे लिखा हुआ है दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ है A. यही इस पर ध्यान देना. And the probability of the A or B is referred as addition theory. अब यहाँ पे A या B हो, but यहाँ पे A नॉट और B नॉट में भी कोई बटा हुआ है, यानी A हो रहा है B नहीं हो रहा, B हो रहा है A नहीं हो रहा. अब A को हम देख रहे हैं और के रूप में, A के रूप में रहेगा तो जोड़ दें, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं और के रूप में, अथवा वो हो अथवा वो ये हो. And here that they have the probability of A or B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A. यहाँ पे माइनस हो जाएगा probability of A. जब और करिएगा तो A और B में जैसे इसको अलग करिएगा तो A और B का पार्ट क्या होगा? वो A को निकालिएगा, A निकलेगा, B को कोई निकालेगा. क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए. चलिए, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा. इसके बाद का पार्ट है वो आपके सिलेबस में. दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थीसिस. इफ यू सेलेक्ट द सेम नेचर पॉइंट, अगर इससे मिलता जुलता आप वर्ड अगर यूज करिएगा, इससे मिलता जुलता कोई काम करिएगा तो इसकी आपको आवश्यकता है, या ऐसे भी इसको जानना है, ये आवश्यक. एंड दैट आपको जिस समय हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम बता रहे हैं, याद करें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आप दोनों बातों को लिखते हैं, ऑकर्स और नॉट ऑकर उस इवेंट के ऑकरेंस को भी लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस भी लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस भी, दोनों साइमल्टेनियसली. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल. वहां पे एक चीज हम और आपको बोलेंगे कि if the probability value of occurrence and non-occurrence are equal, if the probability value of occurrence and non-occurrence are equal, that is the 0.5%, then the graph appears as the normal. ग्राफ जो होगा वो नॉर्मल है. बट इफ नॉन ऑपरेटर्स इज नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है, देन द ग्राफ अपीयर्स द स्क्यूनेस. ग्राफ रिप्रेजेंट द स्क्यूनेस. तब ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा? स्क्यूनेस. ठीक है. एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज जस्ट आई एम टेलिंग दैट वाज नॉट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय द बर्नौली. इसलिए इसको हम बर्नौलियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज द बर्नौलियन डिस्ट्रीब्यूशन. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. वहाँ पे क्योंकि गॉस ने उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन. इसको हम बोलते हैं बर्नौलियन. बट बिफोर कमिंग ऑन द distribution pattern and determination of the formula, and understanding of the distribution pattern, it is necessary that to understand that the 3 points are necessary for the calculation or for the representation of the data in the form of the polynomial. The polynomial distribution or probability distribution or binomial distribution. All these are three. All these are same. All these three are same. Yes, sir. So first जो होगा that is the Bernoulli distribution based on the Bernoulli tract. इसको हम बोलते हैं Bernoulli tract. And here first point that each trial has 2 mutually exclusive outcomes. हर एक trial को क्या होना चाहिए? 2 mutually exclusive outcomes होना चाहिए. One is success represented by P and one is failure represented by Q. Or appearance represented by P, non-appearance represented by Q. Clear?
Second, the probability of success remains constant in every trial. वो कहीं से बाधित नहीं। अगर 0.5% उसका सक्सेस रेट है तो सेकेंड ट्रायल में भी 0.5% होना है, थर्ड ट्रायल में भी 0.5% होना है, फोर्थ ट्रायल में भी जो जो भी उसका जो ट्रायल प्रोबेबिलिटी है, अपीयरेंस का प्रोबेबिलिटी है, वो किसी तरह से बाधित नहीं होना चाहिए। अगर वो बाधित हो रहा है तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नीचे रहेगा, वो गलत। थर्ड, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ये ट्रायल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब ऊपर हम बता चुके हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट डिटरमाइन होगा, कैसे क्या डिटरमाइन होगा। जो ट्रायल है ये इंडिपेंडेंट। And if all these three components are used or fulfilled by any distribution nature or the sample collected by you during the research work, then you easily do the probability distribution of binomial distribution. Here again, there are 2 points. There are 2 points. If you want to draw the distribution pattern, then there are 2 points. ये उस दिन में शुरू के लिए एनसीआर चुके थे, आप लोग कुछ नहीं बतलाया था, ठीक है। दैट इज द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, n combinations of r, that is the n combinations of r, NCR, n on the left side of the superscript in the form of the superscript, and r in the right side in the subscript, that is the superscript n and r in the subscript. And here, if you want to determine the probability of the distribution and you want to draw the probability, okay, then you have the 2 components. You have the 2 components. कभी भी आप one component represents the probable combinations. One component represents the probable combinations. Then the probable combinations is represented by NCR. That is the other side of that is the possibility of the combination. आप कितने ले रहे हैं और उसका कितना कॉम्बिनेशंस है, आप अगर निकालिएगा तो मुश्किल होगा। मान लीजिए कि 1 पॉइंट में 2 है, 2 पॉइंट में 4 है, 3 लीजिएगा तो बढ़ेगा, तो 2-3 में तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फैक्टर होगा फिर आपको कॉम्बिनेशंस बनाने में दिक्कत आएगी। तो एज फर्स्ट यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये कितने कॉम्बिनेशंस को दे सकता है, एंड दैट फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय NCR बराबर n फैक्टोरियल, दैट इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हैं आपको? फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हैं? डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। फिर बोल रहे हैं NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट या मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, where r represents success from 0 to n, n जो भी आप वैल्यू लिखेंगे तो 0 से n तक वो बता रहा है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n जो है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये क्या बताया? इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बता देगा, 7 होगा कि 9 होगा कि 12 होगा कि 15 होगा कि 30 होगा, दैट इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होगा। एंड सेकेंड पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस, कितना अपीयर होगा उसका चांस क्या है, या कितना अपीयर नहीं अपीयर या नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द x और प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट x। अब यहाँ पे x कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p के द्वारा और नॉट x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम q। क्लियर? एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द p बराबर p पावर r q z माइनस ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये नंबर किसका बता रहा है? प्रोबेबिलिटी। एंड देन इफ यू वांट टू derive the distribution pattern, you multiply this value by this possibility combinations multiplied by the possibility of the probability, possible probability,
That means this one represent the pattern of ये क्या कर रहा है? Pattern of for the one group. But if you want to study in the different areas, that means the sectors are varying. वहाँ पे क्या हो गया? सेक्टर जो है, मान लीजिए कि एक आपने स्टडी किया, आप कौन बोला है? आप किस कुआंते में रहती हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? पर 3 सेक्टर, मेजर नंबर क्या होगा? 3, that is मल्टीप्लाई, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है?